Good morning, everyone. A very good morning to all of you. I hope I am clearly audible and visible. Suman beta, very good morning. Very good morning. So today we'll be starting with a new topic, that is political geography. Okay. Dheeraj beta, a very good morning. And this is some term that everybody knows what it is. Suman beta, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. So very good morning, everyone. Settle down. Vikrant beta, a very good morning. Dheeraj beta, good morning, everyone. Okay, so today also we'll be looking at some of the aspects that are necessary in order to qualify the exam, and this is one leg where you'll see that we'll look at the various things which are happening in India. Okay, we'll be looking at why some of the things are happening, how they are happening, and how they are affecting. Okay, so these are the chapters which will help you to understand your own surrounding better, and this is what we have been trying to achieve since we started with the syllabus, barring the core physical part. Like I keep telling you that if you are observant, this subject matter is easy. Okay? So if I talk about today politics की अगर हम बात करते हैं, okay, if you talk about the politics, तो सभी को पता है, ठीक है? Everybody is aware, everybody is talking about this thing. So it is one subject matter that everyone knows, okay? But what is political geography? अगर हम geography में बात करते हैं तो what exactly is political geography? Okay? Political word geopolitics, while discussing the perspectives as well, I informed that it was some terminology which was used by Jolin, okay? And later it was something which many of the individuals like Redzel, Housofer, everyone contributed towards, okay, the emergence of this terminology. But we have to look at these things from the perspective of the geography, okay? So the subject matter of political geography. So geography, in a sense, politics is happening where? Is happening at certain space, some area, some region, okay? So in this thing, we'll be looking at the spatial impacts or the variations or the things that happen because of the politics, okay, the unevenness that we saw in space, that we experience, and the effect that geography has on politics, and the effect that politics has on geography, okay. सुमन बेटा, गूगल से आपने ट्राई किया है इसका मीनिंग समझने का? ठीक है, आप लोग सवाल जब भी पूछते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि पहले खोजेंगे कि इसका मतलब क्या है, एनालिसिस का मतलब क्या है, क्रिटिकल का मतलब क्या है, ओके? हर चीज के लिए आपको सर नहीं चाहिए, और अगर हर चीज के लिए सर चाहिए तो सर ही आईएएस बन जाते. वर्ड देखिए ना, क्रिटिकल इज लाइक व्हाट? वर्ड मीनिंग बताइए, आप ही बताएंगे अभी. क्रिटिकल का मतलब क्या है? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, पहले हम इसका समझते हैं. एग्जामिन करता है डॉक्टर आपको, ओके? ये जो 3 वर्ड आपने लिखे हैं, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन. आपने लिखा है क्रिटिकली, ठीक है, ये डिक्शनरी में एक बार देखना होता, ओके? आपने लिखा क्रिटिकली अकाउंट, ओके? उसके बाद आपने लिखा क्रिटिकली एग्जामाइन, उसके बाद आपने कहा क्रिटिकली एनालाइज, ओके, या एनालिसिस जो भी है. नाउ व्हेन यू गो टू ए डॉक्टर, व्हाट यू डू? यू टेल हिम कि मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, ये दिक्कत हो रही. यू गिव एन अकाउंट, यू जस्ट टेल कि आपको क्या लग रहा है, ओके?
क्रिटिकली पे आएंगे, ये जुड़ जाता है तो क्या होता है, विल सी। बट अभी ये शब्दों का मतलब समझिए फॉर आंसर राइटिंग। ओके, अभी इसको छोड़ते हैं, आंसर राइटिंग में ये क्या है। बीइंग ऑब्जर्वेंट, मैंने कहा है ना हर चीज लाइफ से जुड़ी हुई है, ये चीजें हो रही हैं आपके साथ। यू गो टू ए डॉक्टर एंड यू गिव एन अकाउंट कि मेरे सर में दर्द है, पेट में दर्द है, देश दुनिया जो भी है। ओके, यू टेल एवरीथिंग अबाउट द थिंग्स दैट यू सी। ओके, यू सिंपली एक्सप्लेन द थिंग। ओके, कि आपको क्या फील हो रहा है। नाउ देयर इज एन एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर, ही एग्जामाइंस। ओके, what exactly is happening with you, okay, what you are experiencing, and after the examination, okay, आपने जो कहा प्लस जो एक एक्सपर्ट को देखा, okay, so this is what, okay, क्या हुआ है वो बताया जा रहा है। दिस इज अकाउंट, यू आर अकाउंटिंग, जैसा दिख रहा है आपको पता चल रहा है, आप लिख रहे हैं। ओके, व्हेन यू आर एग्जामिनिंग, तो डॉक्टर इज ट्राइंग टू सर्च, कुछ खाया था कि नहीं खाया था, हाउ इट हैपेंड, व्हाट एंड हाउ, दोनों आपको यूज करके एग्जामिन में लिखना है। ओके, नाउ डॉक्टर ऑब्जर्व्स कि ये खाया था, ये पिया था, पूछ लिया अपने सारे सवालों। ओके, मुकेश बेटा खुश रहिए। ओके, उन्होंने सारे सवाल पूछ लिए, ये एग्जामिन की दिस बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, ये कह रहे हैं, ये चीज की है। ओके, नाउ ही एनालाइजेस कि ये खाया था, इससे फूड पॉइजनिंग हुई होगी। ओके, नाउ ही इज गेटिंग फूड पॉइजनिंग एंड अल्टीमेटली ही इज अफेक्टेड। सो ऑल द आंसर्स गिवन, ओके, व्हाट का भी आंसर, हाउ का भी आंसर, कैसे मिलेगा, why this reaction is there on the body। okay, so this is why, यानी हम ये सिर्फ नहीं लिखेंगे, will क्वेश्चन जब आएगा तो हम what, how, why सबको एड्रेस करेंगे। okay, the most wholesome thing that you'll be doing based on analysis, my knowledge, someone else's knowledge, all the reasons that we can search for, examine what the thing is, how it happened, okay, account simply what it is, this is what you are supposed to write। okay, प्रभजोत बेटा वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम ऑल गुड, समझ में आ रहा है सुमन। account for your telling what the thing is, examine how things happened, if something is there, how it is there। okay, analyze everything that can be written about it, what it is, how it is, why it is, every aspect of it। it is up to you। okay, if AI can do everything, you don't even need my lecture। AI अभी इतना efficient नहीं हुआ है। okay, the day AI starts giving lectures like me, I'll be out of job। okay, I'll not be visible, I'll do something else। there are a lot of things that I can do because I'm human। okay, so I have plenty of opportunity around the world। okay, but I don't think that that is the best of the idea, because you are a new student, right? आपको पता ही नहीं है क्या चाहिए। you look at geography, you think कि यूनिवर्सिटी वाला भी सेम है, IAS वाला भी सेम है, SSC भी सेम है, क्लर्क के एग्जाम में भी ज्योग्राफी सेम है। दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड। ओके, आपके लिए क्या है, ए न्यू स्टूडेंट डजंट एग्जैक्टली नो कि क्या चाहिए, एंड इफ यू आप ही एक्सपर्ट बनेंगे तो हो सकता है आपके 5 ईयर प्लान का पार्ट हो जाए वो, इट विल बिकम ए 5 ईयर प्लान। You can read everything but only looking at UPSC, and what AI does, it takes everything that is found in the universe, in the web। Okay, if you'll take help of AI, it will tell you what USA is teaching, what India is teaching, what Pakistan is teaching, and now your notebook will have so many things। क्योंकि अभी आपकी हालत क्या है, every fact that you get, you're like happy कि मुझे मिल गया। Okay, we don't need it। The moment you understand that we need less, that is the time when you'll start qualifying in various stages of exam।
ठीक है, जब तक आपका गैदरिंग स्टेज है, आई वॉन्ट मोर, यू विल फेल. एंड दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू डू विथ AI. यू वॉन्ट टू गैदर. ओके, सो फोकस ऑन क्लियरिंग एग्जाम, नॉट ऑन फेलिंग. ठीक है, किताब नहीं लिखनी है आपको, IAS बनना है. फोकस ऑन योर टारगेट. Okay, the things that I have already given. Okay, go and buy any market notes, go and buy any course. 2 बार खत्म हो गया होता इतने टाइम में. I'm giving you much more. ठीक है, what people get after failing वो भी दे रहा हूँ. 1 साल बाद लोग क्या करते हैं, 2 साल बाद क्या करते हैं. I'm giving you everything so that you can qualify the exam. But still दिल है कि मानता नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. Can't help. Because everybody is bound to create his own fate. Okay, we are humans. भाग्य हमारा क्या है, हम खुद बनाते हैं, जिसको जैसा बनाना हो. Don't waste time. Okay, either do it with AI or do it with me. Less is more. 2 जगह टाइम नहीं देंगे एक ही चीज के लिए. मैं जो पढ़ा रहा हूँ बाकी लोग भी वही पढ़ाते हैं, कोई थोड़ा ज़्यादा कोई थोड़ा कम. ओके, वो 4 टुकड़ों में पढ़ाते हैं. दिस कोर्स दैट कोर्स आई एम डूइंग इट एट अ सिंगल प्लेस. यहाँ तक क्लियर है एवरीवन हाउ यू विल गो अबाउट आंसर राइटिंग? ओके, दिस इज समझ में आ गया. नाउ क्रिटिकली व्हेन यू हैव टू एनालाइज, ओके, और क्रिटिकली अकाउंट और एग्जामिन और एनालाइज. अब ये सारे व्हाट, हाउ, व्हाई एंड द कॉम्बिनेशंस दैट आर देयर, वो तो रहने वाले हैं, दे विल स्टे. ओके, बट हियर when you look at critically, so you'll be trying to identify the problem, the lacuna areas. You'll be looking at the perspective, the problem related with the thing. Okay, some of the negative aspects will get highlighted automatically. Okay, so critically analyze, will be looking at the lacunas or problems. It doesn't mean that the positive aspects को zero कर देंगे. Okay, doesn't mean that positive aspects will be completely avoided. Okay, but the approach will be accepting that, yeah, some of the things are good, but still this is the problem area, this is the problem area. Okay, your question is AI based updation. I said I don't believe in it because you'll get more material. Your question is, I have given the answer. Okay, अंग्रेजी में ही लिखा था, I understood what you asked. My perspective is, you can fail, you can take more time, because already I am giving you a lot more. And if you'll remember all the things, then try to use AI. And I don't think that you remember all the things that I have taught. It was not possible for me even to remember all the things. I don't even remember all the things I keep teaching. Okay. Jayanta, if you want to become an AI expert, do it. I don't mind. Like I said, there are various perspectives. What America thinks, we don't need this much. Less is more, abhi kaha hai na maine. If you'll keep insisting, do it. Okay, it is your choice. It is your life. In how many years you want to become IAS, it is your choice. I'll tell you what I know. Okay, I'll not take suggestions because still I don't feel like you can suggest. You haven't even given a single attempt. So you have never been through the stages. And still you are not yet covered the syllabus. So you are not in a best position. Okay? Either you have faith in me and study the way I am teaching, and then if you don't clear, you can come to me. You do experiments and then you come to me कि नहीं हो रहा है, तो I cannot help. Okay, we don't need that. Why to waste time? Abhi thousands of AI based courses will be launched.
कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, आई कीप टेलिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, हो जाएगा। कल भी यही 15 मिनट लेक्चर दिया था। ओके, सो आई विल नॉट बी वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन दिस। ठीक है सुमन, क्लियर है क्वेश्चन कैसे लिखना है? So everybody who's interested in doing whatever you want, you can. Okay, once I said something, it means that I have said that thing based on my own experience. Okay, and I have lived that life that you have just started. Okay, and giving so many interviews, it means that I was good enough. Okay, that too I was working, not full timer. So when I tell you something, I mean it. मैं 12 घंटे पढ़ पढ़ के नहीं दे रहा था, 5 घंटे में किया है। ठीक है, तो जब मैं बताता हूं तो उसको मानिए। एंड एल्स देयर आर सो मेनी टीचर्स, शॉर्टकट वाले बाबा जी लोग, मेरा प्रणाम है उनको, बहुत सारे बच्चे हैं उनके साथ। उस भीड़ में गायब होना है, आपकी इच्छा है। सुमन, अभी आपको क्लियर हुआ कि नहीं? कि and in the morning this should not happen, but I was really upset with the approach of the students only in the Telegram group. One of the students had requested for blood and everybody is like notes चाहिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, वैसे कैसे पढ़ेंगे। अभी आपके घर में हो जाएगा तो यही करोगे क्या? This is the recipe for failure. Okay, though I should not say this thing, but who do not feel anything about others, they are actually not going to help people, and actually we don't want such bureaucrats. Okay, so though I should not wish for such thing, because everybody is my student only. Okay, but such ignorant behavior, such ignorant behavior. सुमन बेटा, ये क्वेश्चन वाला आपको क्लियर हुआ या नहीं? There has to be certain kind of empathy. Okay, empathy नहीं है तो sympathy हो, किसी के साथ बुरा हो रहा है तो okay, instead of कि we support you, we are there for you, ये notes कहाँ से बन जाएगा? Okay, that is your genuine question, लेकिन थोड़ा ह्यूमन है ऐसा दिखना चाहिए। Okay, it's absolutely your choice. We get what we sow. Okay, नहीं डोनेट नहीं कर सकना दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ओके, बट एटलीस्ट वी मस्ट एम्पैथाइज विद पीपल। हमारा क्या है कि नोटबुक 10 मिनट बाद बन सकती है, आधे घंटे बाद बन सकती है। फिर दुनिया में बहुत कुछ हो रही है, हम इतना इफेक्ट नहीं होते, बट समबडी हु इज अटेंडिंग लेक्चर्स विद यू, हु इज इन द ग्रुप, ओके, एटलीस्ट मैसेज ही शेयर कर दिया, कुछ कर दिया। Because in this life everybody is going to experience that situation, we all will, और फिर यही एक्सपेक्ट करना है दुनिया से जो आप दे रहे हैं दुनिया को। नहीं, it is like I'm not pointing fingers at someone, but yeah, at least we can, okay, will try, ऐसा एक कॉन्फिडेंस आता है ना। अभी मैं रोज कहता हूँ कि आप कर सकते हैं, आपको नहीं लगता है नहीं कर सकते, बट रियलिटी इसकी जब सिर्फ हमने 5 चैप्टर पढ़े हैं तो अभी हम नहीं कर सकते हैं ना। सो द टेंडेंसी इज लाइक, ठीक है कभी डांटेंगे भी, खराब भी बोलेंगे, लेकिन टेंडेंसी पहली क्या होनी चाहिए? वी सपोर्ट यू, वी आर विथ यू, आवर प्रेयर्स आर विद यू। ओके, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। यू कैन नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट। मैं भी तो यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ब्लड जाके नहीं दे रहा हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप वो नहीं है, बट एटलीस्ट सो सम सपोर्ट। ये आपको लाइफ में हेल्प करेगा जब आपको ज़रूरत होगी, आपकी फैमिली को ज़रूरत होगी, और सबको ज़रूरत होती है। आपके पास पैसा है नहीं है, यू ऑल आर सेम। एक लिमिट के बाद
हमारे बस का नहीं रहता है. What we need is prayers, some emotional support. हाँ कोई बात नहीं, ये मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. Okay, don't be upset about this thing, but I, from the morning onwards, and some of the people called up me. Okay, when I said, when I did that thing, people started calling. ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि कोई बोलेगा, मतलब इसके लिए हमेशा थोड़ा आगे आइए. ट्राई टू हेल्प पीपल. आंसर राइटिंग वाला ये एस्पेक्ट क्लियर है. सो लुक एट द मीनिंग. ओके, लुक एट द मीनिंग एंड यू विल नो कि क्या करना है. अब इसी को देखिए, अकाउंट को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. डायरेक्टली वॉट लिख देगा. ओके, यू विल सी दैट डायरेक्टली वॉट लिखा हुआ है. ओके, और क्या है कि एलाबोरेट लिख देंगे, थ्रो लाइट ऑन. एलाबोरेट, इट सिंपली मीन्स कि इसको डायरेक्टली बता देना है. वॉट एवर देयर इज एलाबोरेट, एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा के लिखिए कि वॉट आर द थिंग्स. ओके, सो जस्ट लुक एट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड यू विल बी एबल टू डू इट. ओके, एंड बिलीव मी, इन एग्जाम कंडीशन सिनेरियो हम इतनी हालत में नहीं रहते हैं कि इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कर पाए. द रियलिटी इज you have only 7 minutes. You have to read the question, you have to understand the question, and you have to write all. Okay, you have to write everything. तो अभी what पूछा है, examine पूछा है, analyze पूछा है. ठीक है, बहुत सारे लोग क्लास में ज्ञान देते हैं, मैं भी देता हूँ. ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज की ये वर्ड ये पूछा था वो पूछा था. इन एग्जाम कंडीशन यू डोंट गेट दिस थिंग. सो बेस्ट अप्रोच इज मेक ए प्रैक्टिस ऑफ एड्रेसिंग at least this much in every question. जो भी पूछा है what and how तक तो हम जाएंगे ही. okay, more analytical kind of question तो हम difference करेंगे. okay, analyze is like a step ahead. We have to come up with more examples, the reasons. okay, so all the reasons, the connections, cause effect, everything has to be there. okay, अभी what ही पूछा है यहीं तक रहना है, ऐसा एग्जाम में आप डिसीजन नहीं ले सकते. you'll fail to decide that. Everybody is clear? Ankit beta, a very good morning. You have not missed anything. We are discussing how to go about answer writing and how to behave. इस पे भी थोड़ा ज्ञान दिया है मैंने. Okay, and it is important because you are entering a phase. Okay, many a times लगता है कि लाइफ अकेले कट जाएगी. ठीक है, आइसोलेटेड ही रहते हैं हम लोग. This is reality. अच्छे में रहिए चाहे मत रहिए किसी के साथ, बुरे में हमेशा हेल्प कीजिए. नोबडी एक्सपेक्ट्स यू. अभी किसी की शादी हो रही है तो ये वाला दोस्त आया कि नहीं आया, वो भले फोन पे बोले कि आप नहीं आए थे, इट डजंट केयर, वो खुश है. ओके, बट व्हेन समबडी इज हैविंग प्रॉब्लम, बी देयर. क्योंकि अच्छे में सभी रहते हैं. सो एवरीबडी इज क्लियर. आंसर राइटिंग वाला थोड़ा समझ में आया. See that thing and you'll understand. Now let us come back to what we had to study, political geography. Like I said, how the space gets affected by politics and how politics in itself gets affected by space or region. सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है. ओके, ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी. सो all the spatial uneven outcomes is studied here under political geography. Okay, how political processes are affected by the space, processes are affected by the space. Okay, how political processes are affected by the space. Okay, we'll first try and understand political geography and everything, and then we'll go to Mackinder. Okay, and how a space
is affected by the political process. Okay, so this is the two major questions in political geography that you are supposed to address. ठीक है, यही दो सवाल आपको एड्रेस करने. ओके, सो ये आप किस स्केल पे कर सकते हैं? नाउ हाउ द पॉलिटिक्स इज अफेक्टिंग योर स्टेट और कंट्री. आप इसको एनालाइज कीजिए, लोकल लेवल पे ले लेते हैं. ओके, द प्लेस वेयर यू रेसाइड, the MLA that you have chosen becomes a minister. So a lot of development is happening in your area. But the MLA whom you have chosen, he is from an opposition party. No development for 5 years. Okay, some fund is there, but it is not happening. Actually, it is not happening. Okay, तो ये पॉलिटिक्स है. आप अगर पावर वाले के साथ है तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा. ओके, द सेम पर्सन नेक्स्ट टाइम becomes an MP and becomes a minister. Now रेलवे स्टेशन भी आपके यहाँ बन गया है, मोर डेवलपमेंट. ओके, राजधानी भी रुकती है. Every train that is important is going to stay. You get a airfield. Now politics again. ठीक है, ये general example how it affects. Okay, so it can be at the regional level. Okay, now in your state the same political party is there which is at the center. Your state starts developing. Okay, at the center there is a government which has relationship with all the mighty nations of the world. A good relationship they are maintaining, so the country starts flourishing and developing. Okay, nobody is a foe, everybody is a friend concept. Okay, we are not intentionally fighting with anyone, so the country starts developing. Now you have a good relationship with US as a country, you have a good relationship with Russia. So what changes are happening based on that? What China is thinking, what Pakistan is thinking, what Nepal is thinking. It is also affecting the space. Okay, so all such factors which can be looked upon from the political perspective, be it at the local level, be it at the regional level, or be it at the international level, all of them come under the study of political geography. ठीक है, तो everything, the local level, the national level, international level, these two aspects, okay, how it is affecting space is going to be the study of this subject matter of political geography. Okay, but fortunately UPSC has specifically mentioned where we have to focus. तो हमें इतनी सारी चीजें नहीं पढ़नी है, बट आपको ये समझ में आएगा कि हमें रिलेशंस भी देखने हैं, बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द नेशंस. ओके, सो इफ वी लुक एट द स्टडी, वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एट द सेंटर. एज ए नेशन में क्या हो रहा है, ओके, एट द सेंट्रल लेवल. देन वी हैव टू लुक एट द रिलेशंस दैट एग्जिस्ट plus what is happening at the local level. Okay, so three tier structure of a study. Of political geography. Okay, so what is happening at the local level? फिर लोकल लेवल आप कुछ भी मान सकते हैं. अब लोकल एक ऐसा वर्ड है. ओके, लोकल लेवल इज ए वर्ड. लोकल क्या है? इंडिया इज लोकल. ओके, योर स्टेट कैन बी लोकल, योर डिस्ट्रिक्ट कैन बी लोकल. ओके, सो रीजनल लेवल की हम बात कर रहे हैं. लोकल लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिकली रीजन दैट यू आर कंसिडरिंग. ओके, द सेकेंड थिंग दैट
we focus is international relations. Okay. And the third one is the government of the day. नेशन में क्या हो रहा है उसको अगर हमें चेक करना है तो स्टेट ऑफ अफेयर्स एट द सेंट्रल लेवल. Okay. So now, if we look at the most important aspect, it is this international relations, okay, because it helps us to understand the geopolitics, okay. And if you remember, this was a term which was given by Jolin. ठीक है, geopolitics याद आ रहा है? Jolin की बात की थी हमने. So everybody is clear? But we don't need anything more than this in political geography. Political geography इतने तक ही है. Okay, अभी हमें सीधे जाना है जो काम की चीजें हैं. Okay. So सबसे पहले when we want to study Mackinder, okay, so you look at Mackinder tried to explain the relations. His focus was relations, okay, with respect to space. Space अब क्या है? Space सिर्फ जमीन है क्या? Okay, some piece of land? No, it is resources. So most of the people who talked about geopolitics, okay, they focused not on the land only. They did not focus on the region only. They actually focused on what? They focused on the resources. अभी colonial period आया, क्यों आया? इंडियाई लोग क्यों आ रहे थे? Because India had resources. Okay, people wanted to colonize Southeast Asia. Resources, spices थे वहाँ, बहुत महंगे बिकते थे. Okay, they wanted to colonize China. क्यों? Opium, बहुत पैसा इकट्ठा होता था उससे. Okay, so the focus was of this relationship that you look at is based on resources. Okay, any country will not want to invest in any region where it sees no resource as such. Okay, और resource क्या है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ material हो. Okay, the resource can be immaterial. For example, we want to keep good relations with Bhutan. We want to keep good relations with Nepal. Okay, if we look at these states, or we want to keep good relationship with Sri Lanka, क्या हम material goods चाहिए? क्या हमें human resource चाहिए? Okay, they are resources to keep us safe, to keep us away at a distance from our rival, that is China. Buffer है ये. Okay, buffer place is space क्या है? जिसकी वजह से झगड़े नहीं हो रहे. Okay, अभी आपकी जमीन है और किसी और की जमीन है और बीच में तालाब हो या नदी हो, तो नदी के उस पार वाले और इस पार वाले के कभी झगड़ा नहीं होगा लैंड को लेके. Okay, so that acts as a buffer. No quarrel because something is there in between. He knows कि beyond that river my land is there, beyond this river my land is there. Okay, so all the relationships that we look at, all the perspectives that we look at in space related to which governs the politics, okay, not only at the local level but at the international level, okay, is part of the study of political geography. But our focus will be first to understand the geopolitics. Okay, and we had a brief discussion about geopolitics in perspectives when we were talking about Zollin. Okay, determinism जब हम पढ़ रहे थे, environmental determinism. Okay, so now we'll start with geopolitics. Okay, in order to understand Mackinders theory, Spykman, why they gave, okay, geopolitics, okay, the evolution, and how it has changed over time. Geopolitics कैसे कैसे change हुआ है. So what you know, those who are revising will let me know कि क्या क्या याद आ रहा है. What are the things that you remember?
जियोपॉलिटिक्स पे कुछ याद आ रहा है? वी हैव हैड ए डिस्कशन ऑन दिस. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिकॉल एटलीस्ट कि ये वर्ड हमने पढ़ा था? रुडोल्फ जेलन नाम याद आ रहा है? अंकित, धीरज, सुमन, जयंता. Everyone, what you can recall? Okay, because the things that you directly read, okay, international relations के lectures पढ़े हुए, okay, if you'll see those lectures even, you'll know कि what are the things which are happening अभी past में क्या हुआ है. But if you look from the geographical perspective, आपका बहुत सारा changes हो जाएगा. Okay, the way you write answer is going to be different from somebody having other optional. Okay, you'll be more reflective of the reasons. So tell me, किसी को कुछ याद नहीं आ रहा है? Nobody is revising. Very good. If we look at the geopolitics, okay, what was the basic feature? Focus on political power. What more? Jolin, how he defined? He took politics and geography. स्पेस और पॉलिटिक्स को मिला दिया तो जियोपॉलिटिक्स हो गया. ओके, जियोपॉलिटिक्स स्पेस, पावर and political practices. The linkages and the interlinkages. Okay. So Jolin, what he did, he talked space plus politics, geopolitics. Space क्या है? So he coined this term. Okay. So nobody else remember anything, right? सिर्फ सुमन को और मुकेश को थोड़ा बहुत याद आया कि हमने पढ़ा है. And for those who are not revising, again, it is my advice, revise, else things are not going to be easy. Okay. And now if we look at the term, geopolitics is an English version which was popularized by Spencer. ठीक है, जॉलन की अगर हम बात करते हैं तो ही टॉक्ड अबाउट जियोपॉलिटिक. ओके, बट द टर्म geopolitics, it was popularized by Spencer. It was popularized by Spencer. Okay. Write down. Jolin was Swedish born, but he spent his whole life in Germany. Sweden में पैदा हुए थे. Okay. So write down. Write down.
Okay. The term geopolitics was developed by Sweden-born German geographer. The term geopolitics was developed by Sweden-born German geographer Jelen. And he gave a simple meaning. And he gave a simple meaning. And he gave a simple meaning to the term. By reflecting on the study of politics, of space, of states. A study of politics, of space, of states. A study of politics, of space, of states. Okay. Now politics of space, of states. आप इसको कहीं भी fit कर दीजिए. Okay. This is such a simple definition. Look at the local level. Look at the local level. आपके नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं? His politics is related to some area कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ बैकवर्ड है, यहाँ रोड नहीं बना है, ठीक है, यहाँ पे बस नहीं है. ओके. एंड ऑफ स्टेट जब हम कह रहे हैं, स्टेट क्या है? ए टेरिटोरियल यूनिट. ओके. व्हेन वी से दिस स्टेट, इट डजंट नेसेसरली मीन कि पूरा कंट्री. ओके. यू कैन थिंक ऑफ इट एज योर डिस्ट्रिक्ट, योर ब्लॉक, और होल ऑफ इंडिया. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन ही ट्राइड टू एक्सप्लेन this thing, okay, Jolin meant nations. Of course Jolin meant nations, but this definition is fits well even at the local level. ठीक है. अगर आप देखेंगे, so study of the politics of space of states or study of the politics of space of regions is political geography आप कह सकते हैं, जो डिफाइन इन्होंने किया था geopolitics को. Okay. So his definition of geopolitics actually became the definition for the political geography. Okay. Write down further. The English speaking word geopolitics the English speaking word geopolitics became more popular with the work of Spencer. Became more popular with the work of Spencer, who focused on social Darwinism, who focused on social Darwinism. Who focused on social Darwinism. अब इसमें क्या है, रेडजेल का भी हेल्प हुई थी. ओके. Redzel's organic theory of evolution of state. Redzel's organic theory of evolution of state
Redzel's organic theory of evolution of state. Further, further help this discipline to evolve. Further help the discipline to evolve. Okay. Now his ideas we have seen. अगर हम देखते हैं जॉलन के वर्क को, रुडोल्फ, कुछ याद आ रहा है कि क्या कहा था इन्होंने? कुछ भी याद नहीं आ रहा है. He talked about what? Political cultural unionism. याद आ रहा है? Okay. Nobody remembers anything? Political cultural unionism, what he said, similar cultures, similar type of people should stay under one state. Similar people, similar culture, should stay under one state. Okay, we have discussed everything. Okay, Mukesh, at least somebody is there who is telling. Okay. And the second thing he said, frontier boundary, natural frontiers boundaries honi chahiye. Okay, he talked about frontier boundary. Okay. So the state must expand its area until they reach what? Natural boundaries. Okay. The expansion of the state continues till it finds natural boundaries. Okay, so these two ideas were basic to his philosophy of geopolitics. Okay, and why he said that this will be achieved? Because he considered a state as a living species. याद आ रहा है ये बातें हमने की हैं. Okay, nobody is responding, so I'm like, मैंने ही नहीं पढ़ाया है, ऐसा हो रहा है. Environmental determinism, did we talk about this thing or not? Okay. Everything that he said, do you want me to repeat everything one more time? हम पढ़ चुके हैं ना जॉलन के सारे आइडिया. Okay. State behaves like a living organism. इस पे किसी को डाउट है? He said that. Okay. But this is the idea that he gave. What Redzel said, we have seen. Okay. But it was housofer, okay, whose work is important in defining this term. Okay. Because he added a concept. ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पहले ही देख लिया है. Okay, his work, you need to talk about this. There can be a question which talks about evolution of the term geopolitics. Okay, so start with Jolin. Then we'll talk about housofer. He talked about the concept of pan region. ये भी अपने आप में पूछा जा सकता है. Okay, so Jolin, then talk about like Spencer, social Darwinism, you know. Then talk about Redzel. ठीक है. तो इनके बारे में बात करने के बाद the other person who gave an important thing is housofer. The concept of pan region.
Okay, his contribution is important. And now if we talk about householder, why he is important? Because he is one certain person who actually worked hard to establish the University of Political Geography. ठीक है? He was champion of the concept of geopolitics. He established an institute of geopolitics. Okay, he established an institute of geopolitics. In 1924. Okay, so this establishment was solely focused on working on the concept of geopolitics. ठीक है? Now he started publishing a journal analyzing the various geopolitics. Okay, and Geopolitics for geopolitics. Okay, even if you forget the name, it's okay. बस याद रखिए, a journal devoted to geopolitics. Okay, role of Redzel, Spencer, householder, it can be asked in exam. ठीक है, thought वाले part का मान लीजिए या इसमें it can be asked. So we are looking at Geopolitics for Geopolitics was a journal that he started. Okay, now his institute gave not only diploma or degree, but they helped everyone who want to work in the field of geopolitics to get jobs. Okay, so he is considered as a champion of geopolitics. Considered a champion of geopolitics. Okay, because not only degrees was, he did not arrange only for diploma and degree. In geopolitics. But also offered jobs related to geopolitical work. Okay, so you can get a question where the question says that householder was a champion of geopolitics. Okay, तो इंस्टीट्यूट के बारे में लिखेंगे, जर्नल है, नौकरियां भी दे रहे हैं, तो ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर जियोपॉलिटिक्स. ओके, नाउ this especially, if we talk about this gesture for geopolitics, okay, for FIR, some of the books FUR, ठीक है, तो वो दोनों ठीक है, पर ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे. यू कैन यूज एनी ऑफ दिस, FUR, FIR. जर्मन है, ठीक है, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन मेनी टाइम्स वी सी डिफरेंट स्पेलिंग्स. ओके, now this journal is considered as one of the champions because second world war के बाद क्या हुआ जर्मनी के साथ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. okay, he started propagating an idea that it was a chance, it was an accident that Germany was defeated in the first world war. Barisa beta,
Great, you are attending for the first time, but make sure that you attend regularly. Okay, this is a new chapter. Maybe some of the things we have discussed in thoughts, but you'll understand most of the things. These are all stories. Okay. Now make your own notes. ठीक है, depend ज़्यादा नहीं रहेंगे कि ये मिल जाएगा या कोई और दे देगा. Make sure that you are making your own notes. This is the person, okay, who can be considered as one of the reasons who pushed Germany into Second World War. Now he started writing, emanating this idea through his journal, that Germany was defeated by chance. ठीक है, वो गलती से डिफीट हो गए थे वर्ल्ड वॉर में. ऐसा नहीं था कि हम वीक हैं. Okay, it was an accident. Okay, and he emphasized that the man has to think geographically and the leader has to think geopolitically. Then and then only a nation can rise. Okay, he gave a very famous statement, okay, that we see every leader, okay, is doing this thing. The man in the street should think geographically, but the leader must think geopolitically. Okay, and it became a tagline for most of the leaders of the world. Okay, now the leaders started focusing on what? Focusing on the relations that exist with other states or the access to the resources that one can have. Okay, and because of this message, Hitler started preparing to take over the areas. Mussolini started preparing, Britain started preparing, France started preparing, and finally what we had? We had a Second World War. Okay, so write down housofer, popularized the idea through his journal, the defeat of Germany in the First World War, was simply an accident. And famously declared that geopolitics sows okay, in inverted comma, the man in the street should think geographically, but the leader must think geopolitically. Okay, now हमने heading क्या लिखी है? We talked about the pan region. Okay, so he proposed the pan region concept. Okay, pan region concept. Okay, जो कि beyond आपके region, the core of the world was reflected by the pan region concept. Okay, Germany, USA and Japan. ठीक है, आप वर्ल्ड वॉर में आपको पता है अलायंसेस हो रहे थे. So he gave a message for alliance.
through his influence, okay, some of the countries must align, ऐसा इन्होंने मैसेज दिया. But all these three countries को मैसेज क्या मिला? जापान को लगा आई एम द मोस्ट पावरफुल, यूएसए को लगा आई एम द मोस्ट पावरफुल, जर्मनी को लगा आई एम द मोस्ट पावरफुल. Okay, so through his pan region concept, he made sure that the world started looking at three regions as centers of power. Now this is a time when people started looking for areas, regions which are powerful. Finally Mackinder के बारे में हम पढ़ते हैं, वो रशिया वाले एरिया पे चले जाते हैं. Okay, now with the pan region concept, he made sure that people are trying to prove or find the power centers, the cores of the world. Okay, so change the para and write. He proposed the pan region concept. He proposed the pan region concept. He proposed the pan region concept. He proposed the pan region concept and declared that there are three cores of the world, and declared that there are three cores of the world, declared that there are three cores of the world. There are three cores of the world, that is Germany, USA and Japan. Germany, USA, Japan. Okay, there are three cores of the world. He considered these cores as the centers of power. He considered these cores as the centers of power. He considered these core as centers of power. Centers of power. Now this became the basis. आपको पता होना चाहिए कि Japan was aligned with Germany in the World War. Okay, and this was the blunder. This was the biggest blunder that Hitler made. Geopolitics ही change हो गई. ठीक है? Looking at this message, Hitler was influenced so much, he aligned with Japan. Okay, and course of the war changed. Okay, so you can write his writings made Hitler to align with Japan. अगर वो यूएसएसआर के साथ जाता तो उसको कोई हरा ही नहीं पाता. ठीक है, बट इट वाज हाउसोफर जिसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. Influenced by these ideas only, Hitler had expansion. तो इसमें क्या है? Already we have talked about how Ratzel, Jelen, okay, Spencer, ये सारे लिखने हैं आपको. ठीक है, Spencer, houseofer. Okay, so this is the concept was changing, alignment and this thing. Okay, and if there is a question on pan region, okay, you have to add that Haushofer considered that these are the most powerful centers. Okay, and his pan region concept showed some initial success by making an association of Germany and Japan and later stages. Okay, he created a euphoria that they are going to win. Okay, now his writings, write down few more lines about it.
his writings were one of the most potent force after the writings of Jolin. His writings were one of the most potent force after the writings of Jolin, which became the basis of German aggression, and the unity of people of Germany, and the unity of people of Germany, as he was able to create a war euphoria for the German people, as he was able to create a war euphoria of war in the German people, and made them believe that they can achieve their past glory, that they can achieve their past glory. Okay, so now अब जियोपॉलिटिक्स जो वर्ड है, ओके, जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड, व्हाट द कॉन्सेप्ट स्लाइटली चेंज्ड. ओके, स्पेस रिलेशनशिप में हम क्या देख रहे हैं? इनिशियली इट वाज लाइक द स्टेट्स मस्ट एक्सपैंड, ओके, रेड जेल, जॉलन, स्पेंसर, लिविंग स्पीसीज एंड एवरी काइंड ऑफ डिस्कशन. बट दिस पर्सन सडनली said that the politics revolve around some of the core areas. ठीक है, जो इनके साथ aligned है, whoever is aligned with these people, okay, are going to be powerful. Okay, so change the power. Housofer added a new dimension. Housofer added a new dimension to geopolitics, which revolves around the power centers. Housofer added a new dimension to the geopolitics. Added a new dimension to the geopolitics, where the geopolitics revolves around the power centers. Okay. Now, फिर से मैं आता हूं, क्वेश्चन जो मैंने कहा था, चैंपियन ऑफ जियोपॉलिटिक्स आता है. नाउ टेल मी, even if it is a 15 mark question, will you be able to write or not? Because if what he did, geopolitics को एकदम ही नया मीनिंग दे दिया. He gave a new meaning to geopolitics. ठीक है, दो इन आर सिलेबस विल स्टडी अबाउट मकाइंडर, महान, वो स्पेसिफिकली दिया हुआ है, मकाइंडर एंड स्पाइकमैन. बट एवरीवन एल्स, okay, this idea that he presented became the basis for everything else. Cohen came out with the gateway theory. Okay, now some of the people said that the power center will become that area who have control over sea. Power center specific हो गए. Okay, due to his work, change the para, due to his work, now people started, many of the geographers started to find reasons for the existence of the cores or power centers, for the existence of power centers. Okay, for example, now the concept of sea power is most powerful. Okay, this is concept given by Mahan. Okay, Mahan ने कहा कि those who have control over sea, they'll be most powerful. Okay,
So these are reasons and thinker. Reasons of power, reason behind power, and the thinker that gave this idea. Okay, this is visible, right? So a sea power was stressed by reasons of power or core, development of core. Many people try to explain this thing. Okay, now air power key to survival. Key to survival, सेबर्स्के. ये सब बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है लेकिन हमें नहीं पढ़ने हैं सारे. ओके, बट रेफरेंस में लिख सकते हैं. एयर पावर इज की टू सर्वाइवल. सेबर्स्के, ही वाज ए रशियन कंट्रीब्यूटर. ओके, गेटवे थ्योरी. ओके, गेटवे, देयर आर ऑलवेज गेटवेज टू एंटर ए पावर सेंटर. ठीक है, ये कोहेन ने कहा था. ओके, नाउ लैंड पावर. ओके, लैंड इज मोर पावरफुल, लैंड प्लस सी. ओके, मकाइंडर, ये हमें पढ़ना है. Okay, now like mahan but a slightly different idea was given by spykman. तो इतने सारे लोगों ने क्या किया है, all of them tried to find reasons behind power. ठीक है, पावर सेंटर्स क्या है, analysis of the power centers is started. Okay, after the idea of प्रभजोत. बेटा you must यूज ग्लासेस. ठीक है, अब इतने, ये बोर्ड पूरा कवर हो रहा है. ये कितना बड़ा बोर्ड है, 85 इंचेस का है. अब इससे बड़ा लिखूंगा तो एक एक वर्ड हो जाएगा. ओके, यूज ग्लासेस. स्क्रीन बड़े देखिए. ठीक है, उसको घुमा लेंगे. ऐसा छोटा सा फोन का एक हिस्सा ऐसा फ्लैट रख के देखेंगे लेक्चर तो नहीं दिखाई देगा. ऐसा भी करेंगे तो होगा नहीं. तो यूज ग्लासेस. ओके, क्योंकि इस तरह तो एक ही वर्ड एक वर्ड लिखूंगा तो बोर्ड वर्क ही छोड़ देना होगा मुझे. दिस इज 85 इंचेस. तो द थिंग दैट आई एम राइटिंग इज नॉट दैट स्मॉल. ओके, और किसी को दिखाई नहीं दे रहा ऐसा है? मे बी थोड़ा, ये ठीक है. Okay, now gateway theory, this is important. He said that there are 9 gateways of the world. Okay, इसके बारे में क्यों बता रहा हूं? Because he considered Kashmir is one of the gateways. Okay, those who have control over the gateways or those who can influence the gateways, okay, they will have control over the world geopolitics. ठीक है, तो गेटवे थ्योरी. और बाकी तो नाम से पता चल रहा है. महान के बारे में some reference I'll give. Okay, gateway theory is a theory which considered Kashmir as an important gateway. Anybody who is involved in this, the politics of these regions will be close to the पावर सेंटर्स. इसलिए चाइना, पाकिस्तान, इंडिया तीनों लगे हुए हैं. और अमेरिका क्या है, वो भी लगा हुआ है. बाहर ही डिस्टर्बेंस करता है. ब्रिटेन बोल देता है, अमेरिका बोलता है. उनको क्या करना है? ओके, द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, अचानक कोई पार्लियामेंट्रियन बोलेगा. ओके, ऑल द कम्युनिस्ट पार्टीज, वो दुनिया में कहीं भी हो, दे फंड सच काइंड ऑफ डिस्कशन अबाउट कश्मीर. ठीक है, दे वांट टू स्टे रेलेवेंट बिकॉज दोज हु टॉक अबाउट द कश्मीर रीजन is influencing and not allowing India
और चाइना टू इमर्ज एज सुपर पावर्स, क्योंकि चाइना और इंडिया इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चाइना हैज स्मॉल पार्ट ऑफ कश्मीर, इंडिया का हमारा है ही वो पूरा सारा का सारा कश्मीर, कि पाकिस्तान हैज इलीगली ऑक्युपाइड सम पार्ट। तो दिस इज वन ऑफ द पावर सेंटर्स जो कि पावरफुल नेशंस को इमर्ज नहीं होने दे रहा है। ओके, so these are gateways, gateway theory of Cohen, so you can use this reference। okay, now Mackinder, Heartland की बात की थी इन्होंने। okay, and later spykman, we'll see, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो these names everybody is clear? okay बेटा, there are many of them and we don't have to know that। ठीक है, गेटवेज जरूरी नहीं है कि 3 गेटवे आपके कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं, ओके, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, गेस नहीं करेंगे, ये जरूरी नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि don't venture into those areas which are not important। if something is important, I am giving you faint idea, शोध करना ही नहीं है। ओके, आपको क्वेश्चन आएगा तो रेफरेंस में लिखना है हाउ द जियोपॉलिटिक्स चेंज्ड। ओके, हाउसोफर चेंज द कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स। ओके, नाउ मकाइंडर, तो मोस्ट ऑफ द वर्क अभी तक हमने क्या देखा है, ऑल दीज पीपल आर जर्मन पीपल हु आर वर्किंग ऑन जियोपॉलिटिक्स, तो मेजर कंट्रीब्यूशन उनका है। ओके, नाउ when people understood that the centers of power are there, okay, now second world war happened। मकाइंडर भी पावर की बात कर रहे हैं। ये सारे कौन है जो पावर सेंटर्स कौन है, क्यों है, इस पे काम कर रहे हैं। ओके, बट व्हेन दिस वर्ल्ड वॉर हैपेंड, when the second world war happened, now everybody recognized that there was a need of balancing act। okay, now everyone recognized that there is too much danger of considering only few power centers। okay, so there was need of a balancing act, and this was mostly emphasized after the start of the cold war era। अब कोल्ड वॉर एरा में क्या हुआ, 2 पावर सेंटर्स इमर्ज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। ओके, यूएसए, अब ये 3 जो हम बात कर रहे थे, जो हाउसोफर मैंने कहा था, कोई नहीं बचा, ब्रिटेन नहीं बचा, ओल्ड पावर्स एवरीवन वेनिस्ड, जर्मनी नहीं रही। बट कोल्ड वॉर एरा अगेन थ्रेटेंड द वर्ल्ड दैट देयर कैन बी वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फिर से वर्ल्ड वॉर हो जाएगा अगर ये सबके आइडियाज हम लेके चलते रहे जियोपॉलिटिक्स में। ओके, ओनली सर्चिंग फॉर टारगेट्स कि कौन पावर है, किसके करीब होना चाहिए, किससे दूर होना चाहिए। सो इट वाज द यूएस सेक्रेटरी हेनरी किसिंगर, ओके, he said that the whole geopolitics is centered around the 2 cold war era powers, USA and USSR। okay, and it is important that containment is done। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो पावर है, एक पावर को दूसरे पावर को रोकना होगा। इट मींस दैट यूएसए हैड टू कंटेन यूएसएसआर सो दैट नो प्रीवियस सिचुएशन इमर्जेस। इफ देयर आर टू मेनी पावरफुल पीपल, 2-3 है, तो फिर से क्या होगा, फिर से वॉर हो सकता है। ओके, सो चेंज द पैरा एंड राइट। The term geopolitics, the term geopolitics, the term geopolitics and its description by the German geographers became a justification
for all the Germany's actions in the World War, for all the German action in World War and the Holocaust, and the Holocaust. And the Holocaust. Such reflection, such reflection, such reflection affected the political geography negatively, affected the political geography negatively. Affected the geopolitics negatively. Okay, and much of the progress, much of the progress made by political geography and geopolitics, and much of the progress made by political geography and geopolitics came to a standstill, for next 2 decades. इतना बदनाम हुआ ज्योग्राफी, okay, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, दैट क्योंकि हम देख रहे हैं जर्मनी को फोर्स कर दिया, सबको फोर्स कर दिया. These geographers became the reason to throw the world into wars. ठीक है, ये सारे वॉर करवा रहे थे बैठ के, वॉर कैसे होगा, वॉर पे क्या इम्पैक्ट होगा, सब वॉर पे चल रहा है. तो ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, local level, and this other perspective that we talked about, they became not so important, and suddenly geopolitics became important. और वो कर क्या रहे हैं, लड़ाइयाँ करवा रहे हैं. Okay, but again when American perspective of containing USSR became dominant, okay, तो फिर revival of geopolitics start होता है. Okay, America starts looking at the nations from this perspective, a changed perspective where USSR has to be contained, and everyone starts aligning around these two power centers. Non alignment उसी में आ जाता है, बहुत कुछ आता है. ठीक है, अंकित बेटा, यूरोसेंट्रिसिज्म you can talk about. Okay, the study of geography, यूरोसेंट्रिसिज्म में आप रेफरेंस दे सकते हैं. Okay, लेकिन बहुत सारे बाकी स्टडीज भी हैं, ठीक है, उनको फोकस कीजिए. ज्योग्राफी इज लेस अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड मोर अबाउट सेटलमेंट, पॉपुलेशन, ओके, एंड ऑल द थ्योरीज दैट यू हैव रेड. ठीक है, बाकी चैप्टर्स में उन पे ज़्यादा फोकस करना अच्छा होगा. ओके, नाउ चेंज द पैरा एंड राइट. Geopolitics experienced a revival in the 1970s. Geopolitics experienced a revival in the 1970s. When it reflected on balance of power, when it reflected on the balance of power between the two Cold War rivals, balance of power between the two Cold War rivals, United States and the Soviet Union. United States and the Soviet Union. United States and the Soviet Union. Okay. Here US led by Secretary of the State. Here US
led by Secretary of the State. Here US led by Secretary of the State, Henry Kissinger. Henry Kissinger. Focused on containment of USSR, containment of USSR, initially influenced by the ideas of Mackinder, initially influenced by the ideas of Mackinder, and later following a path suggested by spykman. Spykman, that is following Heartland and rimland theory. Heartland and rimland theory. Okay. Change the para. After the collapse of USSR, the geopolitics changed. The geopolitics changed. And for a brief period, the geopolitics changed. And for a brief period, it seemed that the world is becoming unipolar. It seemed that the world is becoming unipolar. The world is becoming unipolar. With America at the top. With America at the top. With America at the top. But this geopolitical situation was short-lived. But this geopolitical situation was short-lived. Okay? During this phase, USA aligned its all policies based on the idea of spykman. Ideas of spykman. And tried to influence the rimland. ठीक है, हम theory पढ़ेंगे. And tried to influence the rimland. Okay. Full stop, change the para.
silently, silently. The area around Mackinders Heartland, silently. The area around Mackinders Heartland, Heartland was getting influenced by his ideas, was getting influenced by the ideas, was getting influenced by the ideas of Mackinder. And using the path suggested by him, using the path suggested by him, using the path suggested by him, China emerged. China emerged. To challenge the hegemony of USA. Of USA through its Belt and Road Initiative, through its Belt and Road Initiative. Through its Belt and Road Initiative. ठीक है? Why China wants to control the sea and the land? Land पे भी उतना efficient है, every technology, connectivity and everything. And again, it is influencing all the areas. It wants to be in Indian Ocean, South China Sea में सारा activity. Why he is doing? We'll see कि how it has efficiently actually used Mackinders idea that US gave up. US ने वो छोड़ दिया था, इसने start किया and it started influencing the world. Okay, so geopolitics is still to a large extent, if we look at, okay, the ideas finally जिनका नाम लिख रहे हैं spykman and rimland and Belt and Road Initiative of China, if we look at, is still influence of Mackinder is clearly visible. ठीक है, इन्होंने universally declare नहीं किया है कि we are doing what Mackinder suggested, but whoever is into the foreign policy, okay, they know what America was doing and what Mackinder had suggested and how Britain was able to contain. तो उस थ्योरी को इन्होंने बहुत ही अच्छे से यूज किया हुआ है, समझा हुआ है. ओके अंकित बेटा, you don't need to control or contain anything. Okay, ये हम क्या इन्फ्लुएंस करते हैं. चाइना इटसेल्फ नोज कि ऑल आउट वर्ल्ड वॉर पे नहीं जाना है, हमें लड़ना नहीं है. अब सब रशिया थोड़ी है. रशिया को पता था कि ऐसे भी 17-18 साल ही चल सकता है, तो सारे एडवेंचर कर लिए उन्होंने पुतिन के मरने से पहले. बिकॉज द रिसोर्सेज दैट रशिया हैव, एट लास्ट दे नो कि दे कैनॉट लास्ट बियॉन्ड दैट. उनको क्या चाहिए? लैंड चाहिए. ओके अभी पेट्रोलियम पे चल रहा है, हीरे बेच के आप हमेशा नहीं आगे बढ़ सकते ना. दे वांट लैंड. चाइना को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके चाइना नोज दैट वी हैव एवरीथिंग एंड इट जस्ट असर्ट्स दैट वर्ल्ड शुड नो. ठीक है, जैसे जॉलन ने कहा कि इट इज अ लिविंग स्पीसीज. ठीक है, हर स्टेट जब ज्यादा पावरफुल होता है तो उसको लगता है बगल वाले को एक दो मुक्का मारते रहो. ओके वो हम भी करते हैं. आपको चाइना दिखाई देता है, आप श्रीलंका में जाके पूछिए, नेपाल वाले से पूछिए इंडिया के बारे में क्या व्यू है. ओके दे ऑलवेज से कि इंडिया बिहेव्स लाइक वर्क्स ऑन बिग ब्रदर पॉलिसी. ठीक है, नेपाल कहता है कि हमसे जबरदस्ती हो रही है. ओके सो एवरी कंट्री विच इज रिलेटिवली वीक फील्स लाइक कि हमें दबाया जा रहा है.
एंड चाइना इज एग्रेसिव, वो बार बार फील कराता है, इट इज फाइटिंग एवरीवन हु इज अराउंड। ओके, चाइना इज फाइटिंग ओवर 47 बॉर्डर इशूज। ओके, इन टोटल ऐसा देखा जाए 47 अलग अलग जगहों पे उसका टेंशन है, तो उसको लड़ना ही है, दैट इज द थिंग। ओके, if the nation doesn't want to stay calm, no foreign policy, no diplomacy will work। आपको क्या लगता है, इंडिया के वो सुनेगा? वो अमेरिका से फर्क ही नहीं पड़ता है उसको। जापान से भी वो रोज कर रहे हैं ना, इसके हम और आप टेंशन लेते हैं। ओके, टेंशन पॉलिटिशियंस भी लेते हैं, एक सेंटिमेंट होना चाहिए, बट द थिंग इज लाइक they have been doing this thing with Japan for so long period of time। okay, so you should not think all out war, they'll never go। दोनों कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कोई अपना डिस्ट्रक्शन क्यों चाहेगा? until and unless somebody is like Russia, जिनको पता है कि ऐसे भी हमारा फ्यूचर 20 साल बाद नहीं है, तो दूसरे से लड़के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। okay? अभी पाकिस्तान हमारे लिए थ्रेट है, ये थ्रेट है, वो थ्रेट है, ये सब कुछ थ्रेट नहीं है। okay? they know they cannot fight India। okay, but defense is important, we have to be ready, you never know। अभी जैसा रशिया ने कर दिया, ऐसा कोई लीडर आ जाए, but that situation will only happen when they know कि we don't have anything to lose now, because the condition of Russia was like 20 years के बाद उनको पता नहीं है exactly कि what will happen। so now they want some of the land back where from where they can generate enough revenue to sustain their growth and development। okay? तो अब हिस्टोरिकली साथ में थे, 92 में ही थे, तो ले आओ बोल के ले रहे हैं। okay? So everybody is clear how the geopolitics is changing? So broadly the world geopolitics, okay, is revolving around some of the resource bases। okay, and still if you look at this idea of some power center is there, India is emerging as a power center only। now this was military power center से अब क्या हो रहा है? the geopolitics is changing from चाइना के इमरजेंस से क्या हुआ? ओके, सो मिलिट्री कोर्स अब ये इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं रहा है। ओके, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है जियोपॉलिटिक्स में? इकोनॉमिक कोर का है। ओके, व्हाई चाइना इमर्ज्ड? जियोपॉलिटिक्स again changed with emergence of China। okay, the meaning did not limit itself to a nation being a military core। आपके पास कितने मिसाइल हैं? it became irrelevant। now the geopolitics is centered around the economic core। okay, so China enjoyed it despite being late। ठीक है, यूएसए वर्सेस चाइना, ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ इट बीइंग एन इकोनॉमिक कोर। ओके, 250 ईयर्स से यूएसए है। ओके, इट इज अपना ग्लोरी पे चल रहा है। इतनी बड़ी माइट को इसने चैलेंज कर दिया इन 2015। ओके, इट dethroned it। China was able to dethrone it from many of the top positions that it was holding with respect to economy, if not all। और अब क्या है? China is slowing down, so the focus is on India। Every country supports India। आपको लगता है ऐसे ही कर रही है? Because we are the biggest market of the world। And since the emergence of China, the power centers, okay, which were solely focused on military, it became irrelevant, and the new power center is economic course which can survive। okay, if the world is not ready to give it to us,
we have such a huge population that we can run our economy based on our consumption patterns. हम सिर्फ consumption पे ही क्या है survive कर सकते हैं. Okay, so economic considerations became much more important in geopolitics. और ये क्या है, बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है. So this is something that we take help of the military might, because if everything collapses, economy collapses, recession like situation happens, then again it might play a role. ये दिखाने के लिए हम कर रहे हैं. Okay, ठीक है. हाँ जयंता बेटा. So indirectly economic policies, चाइना ने क्या किया, अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करो, वर्ल्ड के हर कंट्री में इन्वेस्टमेंट करो. ओके, अमेरिका क्या है कि लोन देता था और पॉलिसी इन्फ्लुएंस करता था. चाइना सेड कि आई विल डू द डेवलपमेंट, ओके, लेट मी ऑपरेट. इनडायरेक्टली उसने क्या किया, इट स्टार्टेड टेकिंग इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स. सीधा सीधा क्या है, इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकिंग. सो इट स्टार्टेड असर्पिंग द पॉलिटिकल माइट यूजिंग its economic might. Okay, so China played in an indirect manner. Okay, जिसके लिए हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, once some of the historians and the politicians had warned that there will be neo-imperialism. Okay, and most of the countries of the West were utilizing this policy पे कब्जा कर लो, कंट्री कब्जे में है. Now China is using this thing. So now the geopolitics has taken a turn towards economic course. Okay, और मुद्दे बहुत सारे. आप environment की बात कीजिए, World Bank, IMF, देश दुनिया कुछ भी बात कीजिए. Those who can contribute more, they influence more. COVID started from China. WHO की बोलती नहीं निकल रही थी. ठीक है, बहुत सारा डायलॉग जो भी वो आज खड़े होके कहते हो. Okay, when COVID started, World Health Organization was not ready to accept that China is responsible, because at that point in time China was funding the organization. Highest contribution. एजेंसी बंद हो जाएगी, सैलरी बोलने वाले की बंद हो जाएगी. ठीक है, बोला चाइना ने किया है, गई सैलरी तुम्हारी, नौकरी गई, ऑर्गेनाइजेशन गया. Okay, so this economic might is not only influencing the countries, but actually influencing the institutions on which the countries depend for various type of help, if not help, information. Okay, so if you look at this understanding, it is very easy. If you understand how it is happening, how things happen, so international relations will become easy. अभी देख के नहीं लग रहा है वर्ल्ड से कनेक्टेड है, the things that you are reading, we are looking at it. कोई दिक्कत? और इसी में छोटे मोटे अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, दैट काइंड ऑफ थिंग्स होता है कि क्रिटिसाइज अदर्स एंड टेल कि हम बहुत अच्छे हैं. तो ये छोटे मोटे फेजेस है, लेकिन मेजर फेज क्या है, द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड. ओके, सो दो I thought that we'll be starting Mackinder in this session only. Next session will be debating on Mackinder, and then we'll see कि how Mackinder ने भी कोई बहुत ऐसा extraordinary feat नहीं किया था, but he was an important individual, and he was smart enough to accept कि मुझसे गलतियां हो रही है. थ्योरी 4-5 बार बदल दी अपनी, जो दुनिया में हो रहा है देखा और लिख दिया. ओके, और लेकिन एक जगह लिखने से क्या हुआ, लोग पढ़ते गए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे बदल रहा है, और फिर उन्होंने और चेंजेस किए. ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट मकाइंडर. दो व्यूअर, इसी सेशन का नाम था मकाइंडर्स थ्योरी, बट वी टुक more time on geopolitics, but it will help you with a better understanding of the international relations, how the relations are changing. Okay, we talked about that thing, because you can always get how the concept of geopolitics has changed over time. Okay, so it was military,
then it became economic, indirectly political, हमेशा involved. Okay, we have seen that. So हाँ, जल्दी जल्दी पूछिए बेटा जयंता. ठीक है. There are various schools of geopolitics. ठीक है, आज की डेट में क्या है कि some of the people are only focusing on economic angle, some of them on political, some of them on social geopolitics and all. तो बहुत सारे हैं. Okay, so you can talk about that if you want, but it ain't is necessary. Mostly क्या है, this is what is happening. Okay, so military core से economic core की तरफ world चला गया. This is the biggest change that had happened with the emergence of China. Okay, and that shift is clearly visible after 2015. When China actually dethroned US in electronics, IT, telecom, ये सब में. हाँ जयंता बेटा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ. One magazine is enough. हिंदू एनालिसिस अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हो, you don't need it. Okay, analysis is for someone who is going to revise. If you are not going to revise, everything is a wastage of time. मजा आता है सुनने में. ठीक है, अभी पूरा लेक्चर सुनने में मजा आया, कहानी थी, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मजा आया. Futile है, useless if you don't revise. This is what Hindu analysis is. This is what any lecture is. This is what दुनिया का every analysis is. If you revise, see that thing. If you make notes. If you don't waste your time. और अच्छे तरीके हैं समय खराब करने के. ठीक है, जाके थोड़ा घूम आएंगे, कॉलोनी के पेड़ पौधों को देख लेंगे, दौड़ के आ जाएंगे, हेल्थ ठीक रहेगा. नो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. रीड वन आर्टिकल. फिर दूसरा क्यों एनालाइज कर रहा है? आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो मैगजीन पढ़िए, एनालिसिस से ही नोट डाउन करना है वही करिए. एक काम करिए, एक ही चीज 4 जगह से नहीं करेंगे. डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन द सेम थिंग. अभी मेरा भी जियोपॉलिटिक्स कर लिया, किसी और का भी जियोपॉलिटिक्स कर लिया. ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी का भी जियोपॉलिटिक्स सुन लिया. वेस्ट हो रहा है टाइम. अभी हिंदू एनालिसिस में सेम न्यूज मैगजीन में 1 महीने बाद आएगा. तो या तो उसी दिन आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, फिर मैगजीन, दोनों क्यों करना है? दिस इज समथिंग दैट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड. मैंने पहले तो टाइम खराब करेंगे और बाद में रोएंगे भी कि कवर नहीं हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा. Whoever is doing Hindu analysis, he is covering the whole news ना. तो why you need magazine? या एक ही चीज पे भरोसा करिए जिस पे करिए, हर चीज नहीं चाहिए. लेस इज मोर. हाँ अंकित बेटा, सफिशिएंट है. ठीक है, बीच में 1-1.5 साल में जो हुआ है वो उसमें नहीं कवर होगा, बट कोई मैगजीन पढ़ेंगे हो जाएगा. यार दैट इज देयर, you can watch from those lectures, you'll get help. Okay, single source for everything. ये मैं 10 बार पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, और दीवार पे लिख लीजिए अगर आप लोग भूल जा रहे हैं. You read about same thing from 5 sources. 5 times you have wasted time, and be sure, I can guarantee कि nobody is going to revise 5 sources. Keep your source singular source. Initially I can understand कि देख लिया कभी इधर. जनता, are you clear with this thing? Either follow the analysis, उसका मिल रहा होगा snippets, what he is providing, use that, or use magazine. Okay, wasting same time on same thing. अगर उस दिन आपने नोट्स नहीं बनाया और रिवाइज नहीं किया है, डोंट सी इट. ओके, वो कुछ भी हो, मेरा लेक्चर ही क्यों ना हो. ओके, इफ यू आर नॉट रेडी टू मेक नोट्स, इफ यू आर नॉट रेडी फॉर रिविजन, डोंट प्रिपेयर. पहली चीज तो ये है कि हम प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, ये मान लेंगे. जिस साल आप रिविजन कर पाएंगे उसी साल प्रिपरेशन होगी, तो उसी साल बनाएंगे नोट्स. झूठ मूठ का ऐसा दिल को तसल्ली, घर वालों को तसल्ली, और अल्टीमेटली रिजल्ट नहीं आना. ओके, वो मत कीजिए, समय बर्बाद होगा
though it feels bad, but everybody who qualifies, ask them, everybody who's writing means ask them, they'll tell you कि revision से ही हुआ. Okay. तो एकदम एक आर्टिकल का देखेंगे 10-15 मिनट जयंता, ठीक है, क्योंकि आप नहीं सोच पाएंगे जब तक सोचेंगे नहीं. मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे आप में से हैं जो मुझसे 1 साल से ऊपर से पढ़ रहे हैं, जीएस में पढ़ा, फिर ऑप्शनल पढ़ रहे हैं. आया क्या? अनटिल एंड अनलेस यू डू द एनालिसिस, गलत हो सही हो, क्या दिमाग में आ रहा है लिखिए, तभी सीखेंगे. दूसरा का बोलते हुए तो बचपन से पापा एनालिसिस कर रहे हैं कि पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी. टीचर्स एनालिसिस कर रहे हैं, पढ़ोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे. दूसरों का एनालिसिस काम नहीं आता है. 1-2 बार देखा, फिर हम सोचना स्टार्ट करें कि वो नहीं आएगा जयंता बेटा. एनालिटिकल थिंकिंग जब एनालिसिस करेंगे तब तो आएगा. किसी और की एनालिसिस से आप क्या हैं? या सिंपली अब्सॉर्बिंग देयर आइडियाज. ओके, इफ यू वांट टू कम अप विथ समथिंग, if you want to become someone who can think, you have to think, you just don't have to listen. ठीक है. अभी गांव के भी किसी आदमी को पकड़ के आप बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट अच्छी है, वो अच्छी थी, उसने क्या दिया, इसने क्या दिया, he'll do the analysis based on the lived experience. वो ये नहीं बोलेगा कि उस किताब में ये बताया था, उस न्यूज़पेपर में ये लिखा था. That is the real analysis. If you want to analyze something, start thinking. Okay? रोज एक आर्टिकल का एनालिसिस किसी और का सुन रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं आप. Okay, 10, 15, 20 days to understand कि which direction I have to go, I can understand. Okay, start thinking, start observing. Okay, your surrounding, start experiencing what you are living. Okay, the reality is everything is happening in the surrounding that you read in human geography. Be observant and you'll see that things are easy. It will depend कि कोई बता देगा, कोई सिखा देगा. थिंकर ठीक है ना, मकाइंडर बता दिया, ये बता दिया, लेकिन बाकी जो मैं बताता हूँ वो आप स्टार्ट कीजिए सोचना. ओके, यू विल सी दैट यू कैन improve a lot faster. Okay, so we'll take a break here. Stay healthy everyone. Thank you.